हम ना अपने साथ पूरा समय रहते हैं, लेकिन अपने बारे में ही सबसे कम जानते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ के बाद मुझे जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगता है वो है टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। एंड भले ही बहुत लोग इसे बहुत सीरियसली ना लेते हो, बट आई एश्योर यू कि इस क्वेश्चन को आंसर करने में आपका सबसे ज्यादा इंट्रोस्पेक्शन लगेगा। तो ये वीडियो किस लिए हेमंत? इस वीडियो से मैं आपको बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देना चाहता हूँ कि आप किस डायरेक्शन में सोच सकते हैं, ताकि आप जो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाए वो मेक श्योर हो कि कंप्लायंट टू द इंटरव्यू। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंट टू द इंटरव्यू? आगे समझेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज हेमंत तुलसान एंड आई क्रिएट कंटेंट ऑन इंटरव्यूज एंड कैट प्रिपरेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस के बारे में, एंड ऑल्सो ये मेरे दोस्त ने मुझे शर्ट दी है। मेरा बर्थडे आने वाला है और मैंने उसे कहा था कि मैं कैसा लग रहा हूँ डायरेक्ट वीडियो में देख पहन के दिखाऊंगा। सो इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, दिस इज हाउ आई लुक इन दिस। ऑल्सो बिफोर माई बर्थडे सब्सक्राइब करिए, 2000 सब्सक्राइबर तक ले जाओ यार। 2000 ईयर में बॉर्न हुआ था, 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे बाई 8 जनवरी, विच इज माई बर्थडे। आई बी सुपर सुपर हैप्पी। बट नाउ लेट्स गेट बैक टू द बिजनेस। तो आई एम श्योर आप लोग इस व्हाइट बोर्ड को देख पा रहे होंगे और अब मैं इसी व्हाइट बोर्ड में पूरा काम करूंगा। सो लेट्स सी। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट स्ट्रेंथ्स। स्ट्रेंथ क्या है? ऑब्वियसली जो आपकी ताकत है, जो नॉट कोर स्ट्रेंथ हाथ पांव मारने वाला स्ट्रेंथ, बट जो आपकी ताकत है, जो आप समझते हो कि यू कैन लेवरेज एज अ पर्सन, दैट इज योर स्ट्रेंथ। एंड वीकनेस ऑब्वियसली जो आपके अंदर कमी है, everyone has weakness, and how you are trying to overcome it. So I'll tell you what an MBA desires. An MBA desires perseverance, time management, be on the feet, punctual, hard work, and a lot of other things. And I know you can have a lot of strengths and a lot of weakness, but your aim is to tell the strengths in a way that makes your chances do better in this course. For example, अगर MBA perseverance मांगता है और आपका परसिवरेंस एक स्ट्रेंथ है, सो यू विल डू बेटर इन दिस कोर्स। एंड वैसी वीकनेस, वीकनेस क्या है? आपको ऐसे वीकनेस बताना है जो आपकी इस कोर्स को पार करने का प्रोबेबिलिटी हिंडर ना करे। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू से दैट यू आर नॉट अकेडमिकली ड्रिवन, दिस इज योर वीकनेस। अब आप एक बात समझिए, आप यहाँ 2 साल पढ़ने आए हैं, एंड इफ यू से दैट योर वीकनेस इज नॉट बीइंग एकेडमिकली ड्रिवन, सो व्हाट इज देयर मोटिव टू टेक यू? नन। सो दिस विल hinder your chances to get selected. So you need to make sure that whatever strengths you are putting, those strengths are the ones जो आपके MBA जर्नी को पार लगाने में मदद करे, and the weakness that you are putting are the ones जो आपको MBA के हिसाब से अच्छा कैंडिडेट ना हो ऐसा ना दिखाए। इट्स लाइक ये तो कॉमन इंसान में वीकनेस है। So make sure this happens. Now I'll tell you what my thinking about strengths and weakness are, but you have to put up stuff which will boost your chances कि हाँ आप इस करिकुलम के लिए एक अच्छे बंदे हो और वो आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है। Now there are some things that people put which I really don't agree with. The first is they put honesty, ठीक है, respectful, etc as their strengths. Realize something, guys. These are basic human virtues which you should definitely have. So if you're putting this, so I don't disagree कि वो आपका strength है कि नहीं, but realize again what I'm trying to say is अगर वो आपका strength नहीं हो तो आप downside में हो actually. And by downside, what I actually mean is if you are not having these values as a person, then you are not a really great person, if I may be allowed to say so. But yeah, but I hope you're getting what I'm trying to say. So you need to realize कि ठीक है, अगर ये सब नहीं बोलो तो बेटर है। Your strengths can be something like team building या team player. It's a very good strength. Why? Because MBA will require you to work in groups. And hence, if you are someone who is a team player, then they will understand कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, जब ग्रुप्स में काम करना होगा तो this can be the person जो सबको जोड़ के काम निकलवा पाएगा। And then you'll have to back it up with an instance. So again, whatever strength you are saying, back it up with an instance. This is very important. If you don't do it, तो आपको strength का कोई मतलब ही नहीं है। For example, if you say कि I'm a team builder, but आपने कभी किसी टीम में काम ही नहीं किया, so it's just you who believe you are a team builder, but are you actually a team builder? I'm not sure. One more thing, if you say कि अगर आप बहुत अच्छे communicator हो, sorry, if you say you are a good communicator as your strength, but in the interview you are communicating really badly, so will they consider it? I believe no.
So there are some things that you should definitely keep in mind. See, if you're a good communicator, it is definitely your strength, but this is something that interview में shows कि हाँ दिख जाता है. आप claim कर सकते हो you are a good communicator, but you are not communicating well in the interview. How do I believe? वैसे ही good listener. So if you are including some of this kind of strength, then make sure that you actually are. If you are someone जो बोले I'm a really good listener, and उनका क्वेश्चन शुरू होने से खत्म होने से पहले आप आंसर दे रहे हो या उनको गलती से भी बीच में काट रहे हो, does not match. So make sure that whatever you are saying is up to the point. Strength में क्या है? You have to put up strength which will align with the kind of situations that the course will expose you to, and if you put this, then your chances will increase. Secondly, always back it up with an instance. This is very necessary. Without, अगर आप बैकअप नहीं कर रहे इंस्टेंस से, तो उसका कोई भी मतलब. This is all about strengths. Let's move to the weakness part. The weakness part now. जैसा मैंने स्ट्रेंथ के लिए बोला, सेम इज फॉर द वीकनेस. सो फॉर वीकनेस, अगर आपके अंदर कोई ऐसा वीकनेस है जो इस कोर्स के लिए आपके निकलने से मुश्किल बना दे, देन इट्स नॉट समथिंग यू शुड पॉइंट आउट. सी, you should be honest, definitely. I'm not telling you कि आप honest मत हो, but there's a difference between telling a lie and not telling a truth. You can have a variety of weakness. Can have 10 weaknesses, and you're pointing out two, three out of them, which is in your best interest कि हाँ ये सब weakness में बोलूंगा तो कोई दिक्कत भी नहीं है और ये लोग मान भी जाएंगे. Now if again example I'm saying कि आप बोलो you are not academically driven, which is your weakness, but you are coming here to study for 2 years. तो realize that the interviewers are mostly the professors and उनको आपको पढ़ाने से मतलब है. Placement is the secondary thing for them, not the primary thing. आपका academics उनके लिए primary है. अगर आप खुद को ऐसे portray करते हो कि यार मैं तो academics नहीं कर पाऊंगा, गॉन, definitely gone. Second, if you know that you have a weakness, then you also need to say what you are doing to fix it. Very important point. So as I have written, if you know that you have a weakness, you should tell them what you are doing to fix it. What do I mean by this? Is कि आपको पता है कि यार आप एकेडमिकली डिफरेंट नहीं हो, बट आप उसको लेके कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो आपको एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मानेंगे. सी, देयर आर टू टाइप ऑफ वीकनेस. वन दैट वी डोंट नो एंड वन दैट वी नो. जो आपको पता ही नहीं, ऑब्वियसली आप उसको सुधार नहीं सकते, बट व्हाट आर एम एज एन इंडिविजुअल इज टू बिकम बेटर एवरी डे, राइट? एंड इफ यू नो दैट यू हैव अ वीकनेस but you are not fixing it, it means you don't want to become better, you don't want to change your life, and you are not someone who the professor will like, because they want someone जो अपना लाइफ को बदलना चाहता है. तो if you say a weakness, again tell what you are doing to keep it fine. Like for example, if I say my fitness weakness है, I'm somewhat unfit and I realize this, तो फिर बताओ तुम क्या कर रहे हो. कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो रोज 10 मिनट, तुम जिम जाना शुरू कर दिए, तुम शुगर खाना कम कर दिए, कुछ भी. सेकेंडली, अगेन, they catch lies really fast. So don't show your perfection as your weakness. जैसे कि आई एम वेरी परफेक्ट, ये मेरा वीकनेस है. ये सब प्लीज मत करना, प्लीज मत करना, बिकॉज वो पकड़ लेंगे यार. यू कैन नॉट शो समथिंग एज योर स्ट्रेंथ एज योर वीकनेस. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आई एम तो एकदम पंक्चुअल, ये मेरा वीकनेस है सर, कोई टाइम पे आता ही नहीं है. ये मेरा वीकनेस है मैम, कोई टाइम पे आता ही नहीं है, मैं तो एकदम पंक्चुअल आदमी हूँ और उसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है. Please, please don't do that. You will jeopardize only your chances, and you might also come across as someone who is trying to fake things. And this is the last thing you want to be considered. Keep this in mind. What are the common weaknesses that you can have? You have a fear of public speaking, very fine weakness. You are someone who lacks some time management skills. It's a very legit weakness. You can say, Hemant, MBA में तो टाइम मैनेजमेंट का बहुत नीड लगता है, मैं टाइम मैनेजमेंट को अपना वीकनेस कैसे बताऊं? यार समझो, जो प्रोफेसर है ना, उन्होंने भी अपना अपना टाइम मैनेज करना पूरी तरह से नहीं सीखा. एंड इट्स अ ह्यूमन थिंग कि तुम धीरे धीरे सीखते हो, सो दे विल अंडरस्टैंड. फॉलिंग फॉर फोमो, भाई सोशल मीडिया इतना हो गया अब, हर जगह कुछ ना कुछ दिख रहा है कि मेरे को मन तो मचल जाता है. तो भाई मेरा दोस्त अगर कुछ कर रहा है, मेरे को अच्छा लगा, मैं बोला यार वो कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ. तुम करना शुरू किए बट बाद में तुम छोड़ दिए. इट्स वेरी ह्यूमन. फॉलिंग फॉर फोमो इज अ वेरी decent, I would say, weakness to have. And what you are doing to fix it, let's say you can make a not to do list. लोग to do list बनाते, तुम not to do list बनाओगे, so that you know that you have to stay away from this. Very legit.
So think on these lines. This is what you should definitely think from the perspective of strengths and weakness. So guys, I hope I was able to add value through this video, and it will help you frame your answers better. Please subscribe to my channel, join my Telegram group so that you can always have a talk with me. Also, I'm happy to announce that I've closed my GDPI course. We have all the seats filled, and I'm really committed to make sure that जो लोगों ने भी join किया, whoever has shown faith in me, they excel with their results. I will also excel with my commitment towards them, and I'll leave no stone unturned. You should also leave no stone unturned. I'll be back here again, guiding you. Thank you so much for giving your valuable time. I hope I was able to add value. Please go in the comments, say whatever you feel. Tell me किस में next video बनाना है, कैसा बनाना है. Give me feedbacks about how I can improve my video, and I'll be the first person to implement them. And also thank you कि आपने मुझे अपना time निकाल के feedback दिया. I'll be grateful to you. So thank you so much again. Wish you all the best in your PI journey, and I'll see you again soon. Very soon.